Hello guys, we know that the future is going to run on AI. और अगर आप AI में ही MBA कर सकते हो, that's the best thing you can do. With a lot of lovely job offers, the data scientists, data engineer, consultants are available for students who do their MBA in AI. And ये करने के लिए best place is to go to Jio Institute with 52-acre campus in Navi Mumbai with average package of 14.74 lakh, highest package 21 lakh, median 15 lakh a package, and only 18 companies are required to place the whole batch. All right, fees for the complete program, and that's the best part, is only 14.52 lakh, which includes everything: tuition fees, hostel, mess, other charges, everything is included in this program. Last date is coming now to apply, 31st Jan, that is tomorrow is the last day to apply. And the batch size is only 60 students. This is one of the major problem. Matlab competition is going to be hard. KPMG, Deloitte, PwC, Grant Thornton, all the major consulting firms are also coming for the placements. We can see here all the major companies are coming on campus, from FMCG sector to banking sector, all the major brands, IT, startups, edtech, media entertainment, manufacturing, इंडस्ट्रियल एज वेल. सो कंपनीज भी सारी अच्छी यहाँ पे आ रही है. तो यार कॉलेज बहुत बढ़िया है, वो हमने जान लिया, सब बढ़िया हो गया. अब चलते हैं मेन पार्ट पे, मुझे एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो हाउ टू अप्लाई फॉर द कॉलेज इज यू हैव टू फर्स्ट फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट योर वैलिड GRE, GMAT, गेट और कैट स्कोर्स. अगर आपका कैट का स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, यू कैन अप्लाई थ्रू द देयर ओन एग्जाम एज वेल, JET. JET exam is going to happen on 7th and 8th of Feb. So last date is 31st Jan to apply. Feb 7th 8th को JET एग्जाम, एंड इट्स माय रिकमेंडेशन कि आप JET एग्जाम दे दो, फाइन, सो दैट कैट में जो कमी पेशी रह गई वो मेरी आराम से कवर अप हो सकती है. So you'll be shortlisted for the interview and then final selection for the JET. Every good side have the bad side as well. So eligibility criteria is 4 years of undergraduate degree आपको चाहिए. सो आप इंजीनियर, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 50% मार्क्स, या PG डिग्री, तो 3 साल का अंडरग्रेजुएट और 1 साल अगर अपने 4 साल कंप्लीट किए होने चाहिए. राइट. फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन मैथ्स along with your GRE, GMAT score. Preference shall be given to the students with work experience. Alright. तो यहाँ पे आके अपना है पंगा पड़ जाता है कि नॉन इंजीनियर्स कांट अप्लाई, ओनली इंजीनियर्स कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. So admissions are now open. Last date is 31st of Jan, which is tomorrow, to apply. All the best. If you have any more questions, please do ask me in the comments. All the best.